हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नई टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पैन्यूवेटिस। क्लासिफिकेशन ऑफ uveitis, एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ uveitis, एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर एंड पैन्यूवेटिस। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ uveitis। एनाटॉमिकल पैन्यूवेटिस, प्राइमरी साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, एंटीरियर चैम्बर, विट्रस, रेटिना और कोरॉइड। तो बेसिकली पैन्यूवेटिस के अंदर क्या होता है, जितनी भी लेयर्स होती है तो उसमें सभी में इन्फ्लामेशन हो जाना ही पैन्यूवेटिस कहलाता है। क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ uveitis, इन्फेक्टियस, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइट्स, अदर। नॉन इन्फेक्टियस, नो अननोन सिस्टमिक एसोसिएशन, मस्कुलेट, नियोप्लास्टिक, नॉन नियोप्लास्टिक। Panuveitis, idiopathic after ruling out other causes. Infectious tuberculosis, syphilis, Lyme disease, leptospirosis. Immunorelated sarcoidosis, Vogt, Koyanagi, Harada syndrome. Infectious endophthalmitis, sympathetic ophthalmitis, Behçet syndrome. Sympathetic ophthalmia. Definition: it is a rare bilateral granulomatous panuveitis which occur often penetrating ocular trauma to one eye. The injured eye is referred to as the exciting eye, while the uninjured eye is the sympathizing eye. Sensitization to some intraocular antigen occur and result in bilateral ocular inflammation. Sympathetic ophthalmia. Penetrating injury is the precursor commoner after non-surgical trauma than surgical trauma. Incarceration of uveal tissue in the wound is a risk factor. In 80% of cases, presentation is between 2 weeks to 3 months after injury, may even occur after 50 years. Sympathetic ophthalmia. Prodromal symptoms is the sympathetic eye due to iridocyclitis, photophobia, blurring of vision, accommodation affected, redness. Early sign: keratic precipitates, retrolental cells and flare. Stabilized disease in both eye: granulomatous iridocyclitis, mutton fat capies, plastic iridocyclitis, vitritis, multiple yellow white nodule in the choroid. Thickening of uveal tract, papillitis can result in blindness in both eye. Therapy: prophylaxis, inoculation of the injury eye before onset of sympathetic ophthalmia is the only way of prevention, usually within 2 weeks of injury. Inoculation within 2 weeks on onset. Therapy: corticosteroids, topical, periocular, systemic anti-metabolites and cyclosporin. A few other common cause of panuveitis. अगर अदर causes की बात करते हैं panuveitis होने की, तो उसमें 10 year history of recurrent bilateral granulomatous uveitis with waxing and waning, exudative retinal detachment on steroids and immunosuppressors. तो बेसिकली अगर किसी को बहुत लंबे टाइम तक बार बार uveitis हो रही है तो ऐसे केसेस में बहुत हिस्ट्री रही है 8-10 साल की, तो ऐसे केसेस में पैन्यूवेटिस होना बहुत कॉमन हो जाता है। कोपेज एंड बस्कर नोडुल्स इन द आइरिस। अब ऐसे केसेस में नोडुल्स दिखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बस्कर नोडुल्स एंड कोपे नोडुल्स इसमें शो होते हैं काफ़ी बार इसमें, जैसा कि आप इसमें स्क्रीन पे दूसरी साइड देख भी पा रहे होंगे। कोपे एंड बस्कर नोडुल्स इन द आइरिस, एक्सटेंसिव पिगमेंट अल्ट्रेशन इन द फंडस एंड यू सी इन द फंडस एग्जामिनेशन। Cope and Busker nodules in the iris, extensive pigment alternation in the fundus, Dallen-Fox like peripheral nodules. Cope and Busker nodules in the iris, extensive pigment alternation in the fundus, Dallen-Fox like peripheral nodules, subretinal fibrosis.
And now syphilis, the great muscular secondary syphilis, granulomatous iridocyclitis, iris sorosicula, iris populosa, iris nodosa. Focal multifocal choroiditis, retinitis, perivasculitis, papillitis, neuroretinitis. Syphilis, the great muscular management, ocular involvement to be treated neurosyphilis, CSF. Evolution should be done in any syphilitic uveitis. Penicillin G25 million units hourly for 2 weeks. Steroids only after effective antibiotic therapy. A 35-year-old male patient with blurry vision. Sarcoidosis, multi-system granulomatous disease, ocular finding, acute and chronic granulomatous iridocyclitis, vitreous snowballs, retinal periphlebitis, candle wax drippings, choroidal small or large granulomatous. Sarcoidosis suspect in any uveitis, chest X-ray, CT scan, serum, AC and lysozymes. बायोप्सी फ्रॉम स्किन, कंजक्टिवा, लैक्राइमल ग्लैंड. एंड मैनेजमेंट में इसमें आएगा आपका कोर्टिकोस्टेरॉइड, टॉपिकल एंड पेरियोडिकुलर एंड सिस्टेमिक. इम्यूनोसप्रेसिव में बी रिक्वायर्ड.